सो हेलो ऑल गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आगे के प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, जो कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में यूज़ होता है, डेटा एनालिस्ट में भी मेजरली यूज़ होता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो guys, we will in this video we will see all the implementation with the help of Python code, how we can import and how we can pre-process the uh, our data with using statistics. तो statistics में generally हमको सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, फिर उसके बाद आउटलायर फाइंड करने के लिए कोड कैसे लिखते हैं। जनरली आउटलायर एक मेजर पार्ट है जो कि हमको डिटेक्ट करना पड़ता है। 5 नंबर समरी, उसके बाद वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज कोड के इम्प्लीमेंटेशन, कोड की मदद से समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पे मैं सब सारे वीडियो के ऊपर टाइटल डालते जाता हूँ जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ये कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी की चीज़ें डालते हैं। तो गाइस, सेंट्रल टेंडेंसी में जनरली हमारे पास मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमको सबसे पहले हमको इतना पता है कि हमको जो भी न्यूमेरिक ऑपरेशन करना होता है उसके लिए हम लोग नमपाई यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना नमपाई जो है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, अपना यहाँ पे नमपाई इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नमपाई लाइब्रेरी है वो आप देख सकते हो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब मान लो नमपाई इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे मान लो मैं इसको दूसरे सेल में लिख लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। मैं यहाँ पे एक सैम्पल डेटा ले लेता हूँ। सैम्पल डेटा यहाँ पे इसलिए ले लेता हूँ ताकि मुझे आगे जितने भी मैं काम करूँ इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे करूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा सैंपल डेटा जो मैंने एजेस के लिए लिया है। यहाँ पे जनरली हम लोग यहाँ पे छोटा डेटा सेट है तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो 120 है वो आउटलायर है, बट मैं आपको पाइथन कोड की मदद से यहाँ पे बताऊंगा कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपना नमपाई इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे अगर इसका मीन चाहिए तो यहाँ पे पाइथन कोड में जनरली नमपाई जो होता है लाइब्रेरी, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जो कि ईजिली यहाँ पे हमें मीन और बाकी सारी चीज़ें करने को, कैलकुलेट करने को देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एजेस है, एक मिनट, एक मिनट, मैंने इसको रन नहीं किया इस डेटा सेट को। सबसे पहले मैं यहाँ से डेटा सेट को रन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, मीन, मैंने यहाँ पे मीन्स लिख दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एज है, उस एजेस का जो हमारा, जो हमने ये डेटा सेट लिया है उसका मीन आ गया है। सिमिलरली अगर मैं गाइस यहाँ पे बात करूँ मीन, मीडियन की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मीडियन भी आ जाएगा सेम तरीके से। तो यहाँ पे, एक मिनट, मीडियन की स्पेलिंग गलत है ये, मीडियन, यहाँ पे मीडियन फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे मीडियन आ जाएगा 37.5, यहाँ पे मीडियन आ गया। अब जनरली होता ही क्या है कि ये तरीके से हम लोग यहाँ पे मीन और मीडियन फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा मॉड होता है उसको मॉड, फॉर फाइंडिंग मॉड वी हैव टू import statistics in machine learning part. सो फॉर दैट पार्ट, क्योंकि वो जो नम पाई है उसके नम पाई में जो न्यूमेरिक ऑपरेशन होते हैं वो मोड कैलकुलेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सम डेसिमल वैल्यू एंड different type of values. So for that part, for calculating the mode, we have to first import statistics को हम लोग यहाँ पे, sticks को हम लोग यहाँ पे import करेंगे, import statistics। स्पेलिंग गलत हो गया गाइस, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान ना दे मेरे, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट, स्पेलिंग करेक्ट कर। तो यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे जनरली कुछ नहीं लिखेंगे। एस डॉट एस जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग ऐसे एस यूज़ कर रहे हैं, तो मॉड, और हम अपना एजेस पास करेंगे। तो यू कैन सी हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एजेस, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स एस लिख दिया मैंने यहाँ से। सो फ्रॉम हियर वी विल इंपोर्ट दिस। So with the help of this bunch of code, we will find the median, mode and mean. Generally, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, generally we have to see that the mean and median will be calculating using numpy library in Python, but for calculating mode, you have to import the statistics function
or we can say that statistics to calculate the mode. Similarly, so for finding a box outlier, so जनरली मैं यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मार्क डाउन करके बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आउटलायर फाइंड करने के लिए कोड लिखेंगे अब आउटलायर आउटलायर रन करूँगा इस कोड को। आउटलायर फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एडवांस विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है पाइथन में सी बॉन यूज़ करेंगे। सी बॉन SNS इसको import करेंगे. So with the help of this library we can import our Seaborn library which is used for advanced visualization system. So we will import box plot here. Box plot will give all the things from quartile 1, quartile 2 and everything with the minimum maximum value. यहाँ Seaborn की spelling गलत है. Seaborn की spelling में यहाँ पे ये होगी, sorry, Seaborn की spelling. And then we will wait for a second, then we will get the box plot here which will describe all the value from quartile, minimum, maximum, median and the tendency and all these things. So here you can see that this is our minimum. You can see in our data set also, this is our minimum value, this is our maximum, this midline is median, and this is lower, this is higher fence and this is lower fence. So and here you can see the outlier is lying here uh, outside the data points, like this data contain the same pattern up to 3256, and this contain, you can understand by saying that it contains same, but this value is suddenly change or different from all this value. So here you can see the outliers that detected by our box plot. Now after detecting a box plot, we will go forward to know about our 5 number summary. 5 number summary I will mark down here. Number summary. 5 number summary will give easily all the things like mean, max, median, quartile, 25%, 75%. So for that bunch of code we have to again, or we can import or we cannot import, we have imported, but for you guys I will import numpy library once again, and we will continue searching about quartile 1 and quartile 3. So Q1 and Q3 are nothing but these are 25% and 75%. So for that percentile I will calculate all these things. With the help of this percentile we can get the value, and we have to find 25% and 75%. So I will pass the value that contain this 25% and 75%. So while running this code we will get no error and we will proceed further. Now uh, we have calculated this value, that is Q1 is 25 and Q3 is 75. Percentile is like इन ईजी वे वी कैन से दैट परसेंटाइल, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा डेटा जो है 75% यहाँ पे 75% चीज़ों से आगे है। जैसे 25% मतलब जैसे आप लोग स्कोर भी परसेंटाइल में 95 स्कोर आता है, तो 95 का मतलब ये है कि आपने उन 95 लोगों से ज़्यादा मार्क्स पुट अप किया है अपने मार्कशीट में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आई क्यू आर फाइंड करते हैं। आई क्यू आर इज़ नथिंग बट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, एंड Q3 माइनस Q1 इज नथिंग बट इट इज़ अ we can say that it is a 25% and 75%, and just like that लोअर फेंस फाइंड करने के लिए जो मैंने यहाँ पे बताया, जो 20 और 40 के बीच में ये लाइन जो है, ये इसको हम लोग लोअर फेंस बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पे Q1 माइनस Q1 जो कि हमारा 25% है वो, और फिर उसके साथ हम लोग यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम लोग हायर फेंस भी निकालते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट इसको हायर फेंस लिख देता हूँ, हायर फेंस, और हायर फेंस में यहाँ पे Q3 आ जाएगा और यहाँ पे बस ये
साइन चेंज हो जाएगा जो कि प्लस का है। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा स्टेटिस्टिक्स के लिए। नाउ यू कैन सी हियर, नाउ वी विल प्रिंट आवर value of q1 and q3, or we can first print our lower fence here. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने लोअर फेंस की वैल्यू देख लेते हैं, then we will see the value of higher fence which will help us out to get all the values from here. So यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3.375 और 74.375 के बीच में लोअर फेंस और हायर फेंस की वैल्यू आई है, जो कि ये बताता है कि जो आउटलायर है इनके बीच में तो नहीं होगा। आप यहाँ पे जनरली ग्राफ में भी देख सकते हो 3.75 अगर मैं बात करूँ तो लमसम यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए ये लोअर फेंस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और 74.375 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो this is what this lower fence and higher fence indicate that the outlier does not lies between this. तो जनरली आगे कभी भी हम लोग काम करते हैं तो कुछ भी करते हैं तो इसकी मदद से हम लोग ये पता एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कि जो आउटलायर होगा इनके बीच में लाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं। और ये लोअर फेंस ये बताता है कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में आपको जैसे जनरली मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि 5 नंबर समरी में हमें मीन मैक्स मीडियन क्वार्टाइल और 25% 75% कैलकुलेट करना होता है। तो लोअर फेंस और हाइयर फेंस का यही काम होता है कि वो ये बताता है कि इन दो वैल्यू के रेंज के बीच में हमारा जो है आउटलायर नहीं लाई करेगा, जो कि बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट से भी देख सकते हो। Now in the next step we can see the measure dispersion. Measure dispersion में जनरली क्या होता है कि हमारे पास measure dispersion में जो मीन सॉरी जो हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीज़ें आती हैं। मेजर में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ डिस्पर्शंस, मेजर डिस्पर्शन की यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। np डॉट एजेस करूँगा यहाँ पे, सॉरी np डॉट वेयर, और एजेस पास करूँगा मैं यहाँ पे अंदर, तो यहाँ से मुझे वेरिएंस निकल जाएगा। ये जनरली वेरिएंस है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से वेरिएंस फाइंड करोगे, है ना, स्टैटिस्टिक्स की मदद से अगर आप यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उस पर थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज का कारण अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैं स्टैटिस्टिक्स में एजेस पास करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, स्टैटिस्टिक्स वेरी सॉरी स्टैटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस। अब देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस आया है नमपाई की लाइब्रेरी को यूज़ करके वो ये आया है, और वो और स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके 795 है। अब इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग जो हम वेरिएंस का वैल्यू लेते हैं, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है उस वैल्यू में जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के तरीके से करते हैं तो हम लोग नीचे जो हमारा जो टोटल एन होता है उसके साथ -1 करते हैं, वेयर एज इन numpy वी ओनली कंसीडर एन इन द in our lower section. That is why this make a difference between statistics numpy or sorry statistics variance and a numpy variance. So you can calculate both of them, but with the help of statistics you will get more accurate value, or we can say that uh, both the values are correct, but accordingly you can choose. And one thing more that I want to clarify here, suppose you are it depends upon that you are taking a sample data or population data, because see if you are working on an entire data, so you can also give instant of variance, you can also give p that specify that you are working with population data, right? So here you can see after applying p variance ages, it will give similar value. This is because in the previous, which when we have not considered this p, which is our population data, it's showing 795 because it is operating in a sample data set, while applying p that considered a population data variance, so this will give similar variance, right? So this is what an variance technique with the help of both numpy as well as this statistics as well. Now we will see the
histogram and probability distribution system, because the visualization help us to more clarify the things which we are working on. Histogram, histograms and PDF, which is nothing but probability distribution function or probability density function also sometime it's called. So now for that part we have already imported Seaborn library, so we will use seaborn.hist plot. This is generally the things which we have to do. I will show you one twist in this also. So when you do this, you will get uh, on the entire graphical view of your data set. But suppose in the same data here, I will add uh, KDE. KDE is nothing but it is a kernel distribution function that create a exponential smoothing in your entire data, or it create a smooth curve. When you will pass this KD is equal to true, sorry, true and comma, then you will get uh, oh, it's an error. Let's double shoot. KD is just a second, guys. First we have to pass ages, then only we have to pass this value so that it will get executed, because ages is the primary thing in which we are operating. So now we'll see true is not defined. Oh, I have forgotten to give quotation bracket. Now you can see in this bunch of code you can see the curve that is stimulating in between this graph. This is nothing but this is an exponential curve that more clarifies your histogram. And with the help of QQ we can say that PDF probability distribution function is there or not. So QQ technique is used in further video. We will see all these things. And suppose if you want to create any normal distribution data, then you can also do with the help of this probability distribution function. This clarifies more about the data, and this are the things that help to generally calculate the mean, median, mode, and finding the outliers as well. Five number summary is nothing but it generally give more clarification that the value between this is not an outlier. You if you are searching for an outlier or removing or troubleshooting hyperparameter tuning or tuning your model, so within this range of a value you cannot expect the outliers. And the measure of dispersion is very important, guys. Variance. And in this bunch of code, not bunch of code but line of code, I have explained you about the difference between p variance, statistics variance, numpy variance, how variance differ from population data from sample data, and this is how the graph follow. So that's all for this video, guys. This I will make another video and different video in upcoming session for our algorithm as well. So this is the basic statistics, and I can say this is some if someone is starting machine learning journey or data analyst or data science journey, so he or she could refer up to this. He or she can know the statistics, and there are as many things you can proceed, but this is the minimum required thing. So if you like the video, guys, please subscribe the channel and like the video. Thank you, guys.